हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ टेस्ट। आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज भी मैं आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे कि पहले आप लोग ने ऑलरेडी देखा है मेरा वीडियो और आप सब ने आंसर्स भी दिए हैं। ठीक उसी तरह इस बार भी मैं आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। So before starting, I request you all to like and subscribe my channel and also press the bell icon for further notifications. आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा and अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। So friends, here are few questions. I hope it will helpful in passing your time, and friends, I must say it is interesting just like last time. Okay, so this time also you'll have question, you need to think and you need to give answer in comment box just like before. Okay, so today also I have brought 7 questions for you all. I'll show you one by one as you see, and you need to think and answer in a comment box. Okay, so first you see the question, try to understand and think for the answer. You can take your time as much as you can, and you can write your answer in comment box. Okay, so this way you test your knowledge, you can test your knowledge, and you can pass your time also. So before starting, again I'm requesting you to share and like my video. So let us start, friends. The first question today you have is question number 1. Question number 1 says, as much as it grows, it decreases. Name such a thing. Okay, so there is a thing, okay, which grows. As much as it grows, it decreases. एक ऐसी चीज है जो कि जितना बढ़ती है उतना ही वो घटती है। जैसे कि वो बढ़ती जाती है वैसी वो घटती जाती है। So ऐसी कौन सी चीज है जो कि जितना बढ़ती है उतना ही घटती है, ये आपको बताना है। As much as it grows, it decreases. ऐसा कौन सा चीज है आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, आशा करती हूँ आप सबको समझ आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. As you can see in the screen, question number 2 is a number series. Okay, number series that is 1, 4, 9, 16, 25, and there is a blank. You need to fill up the blank. Okay, what will be the next number? You have to think and write. Okay, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक नंबर सीरीज है जो कि 1, 4, 9, 16, 25 और जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ब्लैंक है। ये ब्लैंक में आपको सही नंबर डालना है। ओके, आपको जस्ट देखना है कौन से पैटर्न में है और वहाँ पे खाली जगह में आपको भरना है, वो ब्लैंक को भरना है। So you need to fill the blank with correct answer, with correct number. Okay, what will be the next one? Okay, so the next question is question number 3. Question number 3 says, a thing which we cannot have or take in breakfast. A thing which we cannot have or take in breakfast. It means there is a thing, okay, which we cannot have or which we cannot take as a breakfast. Okay, what is that? You need to think and answer. एक ऐसा चीज जो कि हम ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते हैं, उसे ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते, नहीं खा सकते। ऐसा कौन सी चीज है आपको बताना है। ओके, सो एक ऐसी चीज जो कि हम ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते, उसको आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4. इट सेज, pointing to a woman, Tusaru said. Here Tusaru is a name of a person. Okay, so pointing to a woman, Tusaru said, the sister of her mother's husband is my aunt.
So how is he related to that woman? I repeat once. Pointing to a woman, Tusaru said, the sister of her mother's husband is my aunt. So how is he related to that woman? You need to answer in comment box, and again I repeat, your answer must be in a single word. Okay. So एक महिला को दिखाते हुए तुसारू, जो कि एक लड़का है, वो बोलता है कि the sister of her mother's husband is my aunt. So तुसारू उस वुमन के साथ, तुसारू और उस वुमन का क्या संबंध है, कैसे रिलेटेड है? हाउ इज ही मीन्स तुसारू, हाउ इज तुसारू रिलेटेड टू दैट वुमन? वो महिला के साथ तुसारू का कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, ये आपको बताना है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन नंबर 5 says the red letter day. Okay, it is an English proverb. The red letter day. You need to write the meaning. What is the meaning of this proverb, the red letter day? Okay, the red letter day, जो कि एक proverb है इंग्लिश में, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में. ओके, सो द रेड लेटर डे, इसका मीनिंग क्या होता है, जस्ट मीनिंग आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में. होप यू गॉट इट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 is, as you can see in the screen, don't be confused. Okay, it is just alphabet like F, L, P, I, N, S, L, P, V. So there is a blank again. So what will be in the blank? And it is easy for you because you have the option here. You can choose the correct option from below. Like just below the question there is an option, the option given. 3 options are there. You can choose any one. The correct one you have to choose and write. Okay, it should be correct. Okay, so क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि आप देख रहे हैं F, L, P, I, N, S, L, P, V, ये अल्फाबेट्स है. एंड आगे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है. ये ब्लैंक में आपको भरना है करेक्ट आंसर से. एंड नो प्रॉब्लम, आपको ट्राई करना है, करेक्ट हो या नहीं आपको ट्राई करना है, जैसे भी हो आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. एंड इसका ऑप्शन है VXY, नंबर B VXZ, नंबर C ORY. सो एक करेक्ट आंसर्स आपको ये ब्लैंक में भरना है. ठीक है. सो द नेक्स्ट and the last question, that is question number 7. Question number 7 is also very interesting. As you can see, there are alphabets only. You can see in middle there is a gap. There are many gaps, not only one. There are 4 gaps. You need to fill up those. Okay, here also you have option. Okay, you have option. There are 3 options. Which one is correct? You need to choose and you need to answer. Okay, so as you can see, there is A blank, double B, C blank, double A, B blank, double C, A blank, double B, double C. So options are there. Number A, B, A, C, B. Number B, A, C, B, A. Number C, C, A, B, A. So number 7 में जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में अल्फाबेट से, यहाँ पर भी आपको ब्लैंक में फिलअप करना है, जो कि ऑप्शंस ऑलरेडी है. ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी है बिकॉज आपको ऑप्शन मिल रहा है. आप कोई भी ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं कौन सा आंसर सही है. जैसे कि नंबर ए वाला ऑप्शन है BACB, नंबर बी है ACBA, नंबर सी है CABA. सो आप कोई भी आंसर चूज करके वो ब्लैंक में भर सकते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी shared 7 questions with you all. So
आई होप यू विल लाइक इट। इस बार भी आप सब आंसर्स करेंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे, आशा करती हूँ। सो ट्राई इट। You can write your answers in comment box. Okay, thank you.